Assalamu alaikum, everybody. Walaikum assalam, Asher. Okay, so yes, today I will be explaining about file handling, which yes, last time when I come I talked about functions, so this time I talk about file handling. Okay, so before we talk about the file handling, let's start by talking about file. So right now we probably should know what a file is. Like, file is just like your data storage. Store the data. You can store text data. You can store binary data, like binary images. Yeah, like images which have binary format. And then there's also text format. And yeah, that's file by default. And then there's file handling, which when we see that there's handling. It's just file handling is to doing like creating, removing, updating, and all that stuff you do with your file, like all that setting to do with the file, like you're changing it, you're doing something about it. And yeah, that's basically about file handling, and you can do that in Python as well. And so, yeah, that is what I'm gonna show today. So let me just head over to my VS Code. Do you guys see my screen? Yeah, Yes, Asher. everybody's We can see that. okay. And so here, um, let's just start by, um, I'll show you like the basic start to when you're starting with your file. Before you even start with that, you need to know if you have a file or not. You, you cannot just start right away without having file. It's probably going to give an error. So, but explain about that once we're done about doing here. Here, look, I have this file. It doesn't have any format, just a basic text file, and it just says hi. And so you could rename it. Let's just do a more easier, maybe like greeting. This is a greeting file. And so when we're gonna do our file handling, even though file handling, one second, wait. Okay. So here you will use your open keyword. It's the open keyword so that we open our file. We have to open our file. The interpreter should know like what's in the file before doing what you want to do it. And so we use this open keyword so that we can open the file for our interpreter, Python interpreter, and then you'll put the name of your file. And in this case, we don't really have any format, and so we'll just write it without. And then we'll do comma, and then we can do comma, and we'll put something called this. We'll just put an R, save it into something called a file. And now you might be thinking, what do you think this R is doing? What it's doing is it's that we have many things to do with file handling, and one of them, which is right here, is read. Read just to like, read the file. And so what it will do is when you run it, what it's doing, it's gonna check if this exist, and then it will check, and then it will do what, and then it will check our if it's an R, whatever it is. This is called a mode. Like, what do you want to do with it? And it will check this, and then it will do what it needs to do. The reason we use these modes, the reason we use these modes is because uh, it's you. We need the interpreter should know like your intentions, and so yeah, so it should know your intent. And it should know your attention, like what you want to do. And so that's why we're gonna add either
like in R, maybe to add something, update it. Yeah. And so we're gonna use R in this case, and let's run it. Okay, so in general, if we talk about this, so yeah, what is happening here, Ashu, that we are actually having the keyword of open. Open is not like the keyword we can say. It's like a I can say a function that just like that we have a print function, we have a type function, right? So this is the function that actually used to open any kind of file. It can be like a text file, it can be like a CSV file, it can be like an Excel file, it can be like an image file also. Yeah, so any kind of file that you want to open. Okay, then now the question is why we want to open that file? Because in data science and machine learning, what we need to do, we need to work on the data. Okay, if we don't have the data or we cannot access that data, so how we can work on machine learning? There is no use case of machine learning or data science, right? So in order to have in order to implement machine learning, in order to implement data science, we need some data. And if we have the data file, so we need some commands that we can access that data file. The command is basically that open for in Python. Okay, by using this open function, we can actually command the file, and from that file, we can have the data. Okay, and if we have the data, then we can implement machine learning, we can implement data science on that. Okay, so the thing is that if we want to work on the data science or machine learning, we should know that how we can access the files all in all types, right? So this is the first thing that you need to in mind, that whenever you need to work with the file, you just know that you need to read or you just need to open that file. Okay, so first thing in open function, that you need to pass an argument. Okay, these two are arguments. Open function, just like print function, takes an argument of something that we need to print. Type functions take an argument that we need to find out what is the type of that particular variable or that something like that. Okay, similarly like this, open function also takes some argument. The argument by default is two arguments we need to give to them. The first argument is that we need to define the file path. Okay, it can be in your directory, it can be outside of your directory. Okay, so you need to define the file path, and after the second after defining the path, you need to define the mode. Okay, the R is here is actually the mode. Mode can be like that what type of action, just like Asher said, that what type of action you want to perform on that particular file. You just want to read that file, you just write on that file, you just want to add something into that file. These are the three modes that we actually worked a lot. जैसे कि हमें फाइल को रीड करना हो सकता है, हमें फाइल को राइट करना हो सकता है, हमें फाइल के अंदर कुछ अपडेट करना हो सकता है। ठीक है, डिलीट कर भी सकते हैं, जिसके लिए अलग से हम कर सकते हैं, बट वो भी हम काम यहाँ पे कर सकते हैं। सो द पॉइंट हियर इज that whenever you want to work with the file, you need to write this function open, and in that open function you need to pass two things. First is file path, second is file mode. Okay, just like Asha said, that you need to define what is the purpose of your opening the file, whether it's read, whether it's write, or whether it's update. Okay, so yeah, Asha, you can go ahead now. Okay, so now that we have a variable, we have our open keyword, and we have the name of our file, like the path, and our mode, what we want to do with it. Let's run. So what do you think answer will be? Anybody say? What do you think? Somebody say greeting. Okay, why do you think it's greeting? How, somebody say hi. Okay. Okay, so is that all the answer? Okay, so let me greeting file. Okay, I know, but so what it's really going to do is let's just check. I'll show you. Let's run. Look, nothing came out. Why did that? Because all I've done, all I've told the interpreter to do. I have not the interpreter hasn't even checked it yet because I have not printed anything related with this. I've only created it. I know I opened it, but I haven't done anything to do.
I've saved it in a variable. I have not done anything with it. So when you want to actually do something, you have to you have to use some kind of method to do that. And the method we will be using because of this is called read. We're gonna be using this read so that we can actually read it, can read our what's in our file and get our output. So if we do read, let me just add a print because of VS Code, I think so. Now if I do print read, during like Google Colab, you don't really need to worry about printing, but like VS Code, you need it. So now look, see we got high. And because what it's doing is interpreter firstly comes here, it sees that we need to print this, but they need to know what file is. And so they go up here, they see greeting for reading, and then they go here, they see what's here, and they print it out here in the print file. That's basically what it is doing. And yes, I also forgot to state earlier, the reason why in fact just using files, it looks like we're probably, because if you go further into data science and machine learning, as you guys are probably are, you will in the future you will not be using file handling that much in this kind of case, because this is just a basic way of doing it. There's actually a more advanced way to do it in data science, like using CSV and Excel files, and and those are the bigger datas where you can clean properly and all that. And that's why it's better to have some kind of understanding about files, so file handling, so that when you get further into, you know what you're doing with the big data, because they're not just the small rows, they're coming with rows and columns, and they're not just small rows and small, not that it's not a small data. Most of the time, it's going to be really big, almost maybe like 10,000 rows of just data, and may not be a lot of column, but it's going to be a lot of data because of the rows. And that's why we're doing file handling. Yeah, that's about it for reading. We are just we're just file open, read our reading file, and that we read it with a print. We're going to use this method if you want to read the whole thing. Okay, and so now Wait, I'll add a Asher. greeting. Wait, Asher. Wait, Asher. Okay, now there's a task for you guys that what you need to do, you need to create a file in your folder and you need to open that file and read that file. Just do Right it. now? Yeah. You don't Okay. need to do it, Asher. They will do. Okay. Everyone, just do it. And if you face any kind of problem, just let us know. Just keep in mind if you're using Google Colab when you're reading it, you don't need to print it out because VS Code doesn't use that kind of way. Hmm. And Oh, so VS Code you have to print it. yeah. And Asher, also tell them that how you can use the file in Google Colab. We need to upload the file, right? Or we need to create the Yeah. file. So just tell them that how we can use the file. Yeah, so in Google Colab, Share your screen. let me share for Google Colab. Let me see what's about it. For Google Colab, you could just use a path backed. There's nothing too bad about it. Because as long as you have your path, you're all good. Can I show? So, here, I Okay. have my screen already. Yeah, yeah. Let me just go to Google Colab. Hmm. Um, Good child. so I can do, let me just, let me create a Uh, new notebook. we have a Teams. You are sharing the Teams, Asher. Huh? You are I'm sharing sharing, Teams. whoopsies. Well, I thought I was sharing my Google. Now everybody see? Okay, so now here what you would Yeah. do is in my desktop, okay, you won't be able to see it, but in my desktop,
right now, I'll create a new folder, okay? Or no, not a new folder. I'll create a file. Create new, and let's just do text document. It doesn't have to be exactly not okay, yes. So it doesn't have to be like I said earlier, when you're going with CSV files and all that, it doesn't have to be that. It just has to be, it can be any kind of format. So if you're using maybe TXT for Notepad or any of that, it's all fine. So let me just create a text document and let me write something in it in my desktop. Can also do it. I'll just say hi in my desktop and I will save it. Now it's saved. I'll name it to greeting. And now that I have the greeting file, it's this file, okay? You can move it by default here. In fact, so all you can do is if you can also take your path, but if you want to do it another way, you can just wait, where'd it go? 1 second. And so here, you can just take the path. You can either take the path from wherever it is, or you can just put it into your Google Colab. So let me just copy the path and I'll show you. Okay, I'll just do it from where I am. Let me just create a hi quickly. I don't want to waste time. So I'll just say hi, save it. Now we'll do it. And so here you'll have to take your path first, which let me just quickly figure it out. Wait, Asher, I will share my screen and let us know. Okay. Wait, Asher. Yeah. Okay. I'm sharing my screen. Can you guys see my screen now? Yes, ma'am. Okay. So for the file path, what you need to do, you have this folder. Okay, there you, if you cursor on that, you will see that there is a files written on it. Okay. तो आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक करना है. अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हो या तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो. अपलोड कैन बी फ्रॉम दिस. अपलोड का मतलब है कि आपके पीसी के ऊपर, आपके लोकल पीसी के ऊपर कहीं पे भी फाइल पड़ी हुई है, एंड देन यू जस्ट डायरेक्टली नीड टू ओपन दैट हियर. जस्ट लाइक कि हम कभी कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, अपनी सीवी को अपलोड करते हैं कहीं पे, तो सीवी को अपलोड करने के लिए हम अपलोड का बटन दबाते हैं और वो हमें पीसी पे ले जाता है, और उस पीसी के थ्रू हम कहीं से भी अपनी फाइल को बस क्लिक करते हैं और वहां पे वो अपलोड हो जाती है. सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी हो जाएगी. सेकेंड वे टू डू इट, लाइक यू कैन जस्ट डू द राइट क्लिक and you have this option that you can create new file. Okay, just create on that new file and rename this file. Like for example, we have just like Asha said, greeting file, greeting.txt, and that's it. You have this file now. If you want to open that file, you can just open that file here. The file will be open here, whether it's a any kind of file. Okay, you can write it here like, hi, I am Aksa Abdul Muiz, right? So you can write that here and just save it. Okay, Control S and just save it. Now what you need to do, the file is ready here. Okay, for the Cola, what you need to do after creating the file or uploading the file, what either you can do any kind, like you can create it or you can upload it. Then you have to come and click on these three buttons.
When you click on this three button, you have this like copy path. Okay, even you can download the file also, because in data science और machine learning क्या होता है कि हम लोगों को कभी कभी फाइल्स को सेव भी करवाना पड़ता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बहुत आसान एग्जांपल दूं, हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया है. अब उस ग्राफ को मुझे फ्रंट एंड पे शो करवाना है. ओके, और मैंने ग्राफ बनाया है यहाँ पे, तो मैं उस ग्राफ को अपने पास एक फाइल में कन्वर्ट करूंगी और वो फाइल मैं अपने पास डाउनलोड कर लूंगी. सो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल, और वो एग्जांपल है जो हम अक्सर यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से. देन आपने सिर्फ क्या करना है, कॉपी पाथ करना है. कॉपी पाथ करने के बाद सेम इक्वेशन हम क्या करेंगे, हम ओपन लिखेंगे. ओपन लिखने के बाद क्या, You have to स्ट्रिंग के treat the अंदर, file. या स्ट्रिंग के अंदर हम उस फाइल का पाथ कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे. जो कॉपी हमने यहाँ से किया था, यहाँ से जो हमने कॉपी किया था, वो यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे. एंड द सेकेंड मोड इज रीड. दैट्स इट, you just need to do that. Okay, and we need to save this file into a variable, so just save it into a file. Okay, and run it, and you will write file.read. See, you have the text from the file. ओके, सो अब इससे ही समझ में आ रहा होगा कि ठीक है, हमारे पास फाइल थी और उस फाइल को हम किस तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. नाउ वी हैव द वे टू एक्सेस दैट फाइल, और उसके पास उसको एक्सेस करने से हमें क्या हुआ कि हमारे पास डेटा आ गया. अब मैं इस डेटा के साथ काम कर सकती हूँ. अब आप देखो, ये फाइल डॉट रीड को अगर मैं इसको सेव करवा दूं एक, सॉरी, ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर मैं सेव करवा देती हूँ. सही है, अब मैं एक्स लिखती हूँ. अगर सी मेरे पास डेटा आ गया, अब ये स्ट्रिंग की फॉर्म है. अब मैं इसको बोल दूं एक्स डॉट अपर, सारे वही वाली चीजें मैं इंप्लीमेंट करना शुरू कर दूं. देखो हो गई अपर. ठीक है, फिर मैं बोल दूं एक्स का जीरो क्या है, इंडेक्सिंग निकालना शुरू कर दूं. फाइन, इट इज वर्किंग, राइट. बट द पॉइंट हियर इज कि हमने यहाँ पे इसको, इस वाली चीज को लिखा नहीं है. हमने ये कहाँ से लिया है, फाइल से लिया है. बट फाइल से लेने के बाद हम उसको एक्सेस सेम वे में करेंगे जिस तरीके से हमने प्रीवियसली सारी चीजों को एक्सेस किया है. स्ट्रिंग को एक्सेस जैसे कर सकते हैं, लिस्ट को एक्सेस जैसे कर सकते हैं, टपल को एक्सेस जैसे कर सकते हैं, सिमिलर वे में हम फाइल के डेटा को भी एक्सेस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? जी मैम. मैम मेरा एक क्वेश्चन था. हम्म. मैम ये बस लाइक टेक्स्ट फाइल को ही रीड करते या फिर और भी अलग अलग टाइप के फाइल्स? सारी टाइप के फाइल्स आप रीड कर सकते हो. आप इमेज फाइल रीड कर सकते हो, आप एक्सेल फाइल रीड कर सकते हो, आप सीएसवी फाइल रीड कर सकते हो, आप टेक्स्ट फाइल रीड कर सकते हो, आप पीडीएफ भी रीड करवा सकते हो इवन. ठीक है, बट जो ओके मैम. पीडीएफ रीड होगा वो बाइनरी फॉर्मेट में रीड होगा, इमेज जो रीड होगी वो बाइनरी फॉर्मेट में रीड होगी. ठीक है, सो ओके यू मैम. कैन ओपन एनी फाइल. ओके. ओके ओके. आशर, कंटिन्यू. Okay, so yeah, that's basically about the read, but that's not just all about read. In this, you can also do read line. There's not just read, and then there's also read line, which what it will do, it will just take, see the first line of your greeting, and it'll just read that. So let's create another line before this saying good morning. And then if I run this, what do you think will come? Read line. Anybody want to say? Morning? It will read a whole line, not just a word. But why do you think it's morning? Because it will read line. Not this is not a read word. Anybody else? Okay, yes. Good morning, first line. Yes, you're right. So basically, this good morning, the reason we get that, you're right. But because of course it's just reading our first line. It's just reading our first line. And so once it reads the first line,
instantly just ends and will not take anything else. And then we also have read lines, which I'm sure you can specify how many lines you want to read. No. Okay, so here we also have read lines, which basically what the read lines will do is when you run it right here, one second. Okay, see basically what it's doing, it stores all your stuff in an array, all those lines, and like what's in that line. It will just it will just store in an array right on the spot. And that's really the yeah, it will take all the lines, but instead it will store it in a list. And yeah, and there's also one more thing I want to explain. What do you think will come if I do this? Read for. If I do read for, what do you think will come? Because now we have read, which will read the whole thing, but you can actually set an argument into it. So what do you think will come? Anybody want to answer? Will it take a line? Characters? Will it read still the whole thing? Anybody want to say in chat or just out? Maybe for line? It will show blanks. Can you guys both just one by one explain why you say it is a four lines? It will show the blanks because there is nothing to read. But I'm four characters. Okay, so firstly, somebody who say that because there is nothing, four characters from the first line, okay? Let me just go back to the first one. There's nothing to read. I'm reading something. I'm just taking this four. That is what I'm asking. Somebody said four characters from the first line, okay? Um, then somebody say maybe four line. That is for in our read line, we have this read line function, okay? You can just repeat it four times, or you can go in for loop in range of four and just say file.readline. Read line will only go once, you can repeat it again and again. That's the read line. You don't take an argument for that. I'm asking about read. Okay, now let me read last one. Four characters. Yes, that is what is correct from the first line. Do you want to explain why you say that? Whoever said four characters, you're right, but can you explain? I think it was a guess. It was a guess, four characters? Mohammed Usman, you guess it, right? He's No, right. it's not guess. Because basically we are accessing the file and we are reading from until the 4. We are giving argument read to 4. Yes, you're right. Okay, you get right. And like you said, it will give good. It will just take the four characters. So even if you go further, probably into like how many there are. If I were to go into 11, look, it will take 11 characters. You go, if you go over your limit of the total characters, all it will do is it will just run the whole thing. That's all. And keep in mind, spaces count as characters because it's still something you're doing with, so it will count. And
Yeah, that's read with the characters, and that's all about the read mode. There's many more, which are really common. And let's move on to the next one. This will be a really important one to understand. It will be really difficult to understand at first, but you'll get it. Now we'll talk about something called W. By default, like we said, we need to write our intention, and this is W this time. What W will do is W will write. We want to write something in our data. Like, let's have empty, and we write something. We can write what we want. File.write. We have this write specifically for our our write mode. Each mode has some kind of function for them. And so we have write for our write function. See, as you can see, even if it has a read, it will not suit because if I do a read, it will say not readable because I'm writing it due to the mode. That's why we write our intention so that we keep it very organized. And that is why Python syntax is really easy. So we have write for our write mode, and we can write anything we want, anything we are what we desire. So whatever we desire, we can just write it. And in this case, I can write, how is your day? And if I run it, what will come? What will come? This or what do you think greeting will be? What is greeting? Quickly. What will the greeting file be? How is your day? Yes, you're right. Because we're writing, we all know that we're just writing it. And yes, we're just gonna write it and then write down spot. It's gonna instantly go. Once you write it, unless you run it, you have to run your code at all times first. It'll give us blank, but it's still doing something. You just always run your code once you write, because if you just write it, it's not like it will pop up into your greeting, okay? You'll have to see it. You have to run so that the Python interpreter can do that. And now look, I didn't even touch my greeting file. I did not write it myself. And right by default, it it gives me what I want. And I can write another thing, okay? I could just write, how's your day again? I could say, how's your how's your week going? And what it will do, it will take that as well. Just run it first. Run it. Check your greeting file, and look, it takes that. But as you can see, it will stay in one line. It will combine it, merge it together. So to prevent that, all you have to do is /n. If you've never heard of this, /n is just creating a new line. So I run it. See, now it creates the line. And so that's what it will do. And so yeah, that's about it for right, but there's one more thing I want to talk about. I should just change the Yeah. file name instead. No, not here, not here, not here, not Oh, here. I know. Okay, I get. That's what I'm going to explain right now. I'll explain that. So, yeah. Now there's just like, she say, what if I say hello? What if I write my file to hello? What will it come as or output? If I run, what do you think will come? Trick question. Anybody want to say? If I were to, Will give an error saying file not found okay, good answer, but why you think so? because because in the first time when we use this function, we were saying which file to read, and this time we have not defined the file yet. Oh no, maybe it will create a new file.
And why do you say that? How will it create a new file? I don't know, just a guess. Just a guess. Okay, and the other person in chat also say there's no file named hello. But yes, you are right. Even the guess, that is right. It will create a new file. Look, I run it. It instantly creates something. It instantly creates what I needed. See? Instantly. Python interpreter knows that if it's not there, instant create. And that's what write is doing. This is why it's a really good advantage for your write file, because you can just instantly take it and it will create a new thing. So when you're doing it, you, there there's something called X. There's something called an X. There's an X mode as well, which is called a creation. It's to create something. And so what here the X it will, like I said already, it will just create a file. It won't do anything with it. It'll create it. And of course, if you don't have the file, it will just create it. If you have the file, it will create an error. And so here in our W, similar to that, if you don't have the file, it will create it like our X, and it will just write it. So when you're doing maybe a project, you don't need to worry about doing steps saying, oh no, I have to do my X first, and then I have to do my W, then I have to do my read. You just have to put a W right away, and it will create as well. Now, one more thing I want to ask you guys. Let me create a new file. Let's comment this all. So far, I've explained about W, explained about X, and I've explained about R. And so let's not, but I'm still I'm still keeping on with W, and this is what I want to ask for you guys. Now let's do something, let's do a question. What is your favorite color? Here is our question. And let's open our question, okay? And let's try writing something in it. Let's write some more, okay? Let's just do our open. Let's take our question. I'll put W. And because I have it, we can just write in it, okay? And so file dot write. Let's write. I also want to write another question. So let's also write a second question for for whoever we give the file to. What is your what is your you could just do what is your favorite food, what you like to eat, and now what if I run it, what do you think? Now let's run it, okay? What do you think what do you think? This function will override the first question in that file that already exists. Why do you say that? I just tried that. That's why. Oh, you try it, okay. Yes, you're right. You try it and yes, you're right. Because what it's doing, it will override it. Because that's a disadvantage of right. You cannot, it will just instantly override. And that's about right. You can also write lines and you can do all that stuff as well, like the read. And yes, that's about right. Function to write without overwriting the before lines. That is what I'm going to explain right now. And so we have, in fact, like you ask, we do have, no need to worry, we do have something. There's a solution to this where we can actually prevent this W
from overriding our stuff. And we will call it A. We have had W, X, R, and now we have A. A is probably what I would probably say is it probably just yes, it's probably a much better version of the W. And so they're both similar, but the only difference is that A, because it stands for append, it's gonna in fact it will just it will just add whatever you have to your end of your file, right at the end. So now that we've lost our question of what is no wait, something happened. 1 second. Something weird happened. Yeah, now look, we've lost our favorite color question. So now we have our A, which we can solve that by using our A, in fact. Let's remove this and let's take back here. Or actually, let's just comment it. Now let's do file. We'll create a new file variable equal to open. We'll open our question and we'll do instead A. And now what A will do is it will just append whatever you get with the same. Like, so let's recall our read file, we'll use our functions read lines. Our write will use our write function. But what about our A function? Does anybody have any clue what do you think A will be? Will it be like, what do you think A's function will be? Because we have a different for our write and we have a different for read. Anybody want to ask why we would probably might have like what would be for A? Because here our write is doing a task where we're writing something. Our read will read something. Append. Okay. Append. That is good. Of course, yes. It's can it should most likely should be append, but nope, it is not append. What it is, in fact, it is file dot write. It's the same thing. In fact, this is so weird, but they do the same thing. Even when I start, even when somebody starts, they're probably gonna think it's append. We already have that for a list. For our lists, we already have append, and so for our file handlings, we use write. Same thing. Just because, but instead, when our interpreter comes, it will say, "Oh, it's append this time." So when you're writing it, it's gonna add on to it. So now we can ask, what is your favorite color? And we can add a slash n so that it can move on to our next line. We've run it. Look, ta-da! We have our delete. We have our delete. The one that was deleted and gone overridden is now back. And that is really useful from our A. But that's just not all. When we So we've talked. Now we all understand that A, R, X, W, X isn't really that useful. It's just to create. If you're not going to use it right away, maybe you can just use an X. But you don't need to add any function for it. You just have to write file equals to open question X and run it, and it will automatically. But if it is already a file, it will give an error. Now let's move on to another one. It's called RB. RB might sound
a much of a weirder. RB, we know B. Let's talk about B first. B is just binary for it would open the final file in a binary mode, and so you can actually use it for other. So you can do that in fact. So let me show how it would look like in fact. So let's comment this. We'll do RB. But before we need to do all this stuff, we need to have an image. So let me just pick one from the internet. Let's do uh okay, let's find just a random image. Doesn't have to be too cool. So we'll do hi. There. We have it's just saying hi, that's all. And so what we can do is let's do file. We have an RB, so we could do file equals to open, or we'll have to open. We need to open our hi.png, comma RB. Now we'll do file.read. What do you think what do you think will come? What will come? Should be we're reading an image. It's binary. Because R and B are just saying it will read it in binary, that's all. We're combining an R with a B. Anybody? Anybody want to say? Maybe it will just give combinations of 0, 1, like binary numbers. Good guess, but when you run it, I forgot to print it. Yeah, I have to print it because it's VS Code. I print it. Look, it is not giving binary. This is just because you can't read exactly like that. And so it's just gonna give all of this, which is like little parts in our file. So it's just gonna give like about the file. It's gonna take this part and it's gonna combine it all together. It's not gonna actually run you the image in our output terminal. So what you can, and so the way we can, so in fact, you can't really do that, but you can also do this. Let's create file 2. Show you another way we can do. We can do, let's do hi2.png, and we'll do WB. WB will write, we can write inside this. And so we can do for I in file, and we'll do file2 dot write I. And so what this is doing is it's gonna take our I is just gonna be our key, file, inside the file, it's gonna take all these line stuff, and we wanna write it into file 2, which is gonna be the image. So if I run this, whoopsies, I just mess it up. Let me just file, there, let's run it. Look at this. We have the same thing in hi2. We have a hi2. It's just gonna do the same thing, just we can have it in our PNG. So basically you can't really run it like an image, but you can read it. Does everybody understand about this? Can't really read it. If you read it, it's gonna do this. If you use our WB,
and now I'll tell, is just writing in binary. You can write binary. There's we have binary which is standing for B and T which is standing for text. So I can do RT. And so earlier when I was doing our text, we can just do RT or R. It won't matter. And so basically because this is an image, we have to use binary. So it's the same thing for A. You can just do AB, just append into it. If you already have something, are these pixels? Uh, yeah, you could say because it's specifying this first, maybe first pixel here times 89, x 89, x 00. Yeah, they are in fact pixels. Um, yeah, so there's RB, WB, AB for binary. These are all doing the same thing I've explained already, just binary. And we can also do RT, WT, AT, and what instead it's going to do that in text. And so in summary, just RT, well, if you want to use it with a T for your text files, maybe you could, yeah, it would be a good idea to do it because you don't want to specify any, you know, if you accidentally use something else, it will specify you an error so that you know your mistake. But otherwise, it will do the same thing. But for binary, you need to use it because then R will not know what it's doing, and so is W. So that's why you need binary to add it into your file thing, and that's about RB, WB. But and those are all the basic stuff, but that's just not all. You can also do if you can actually what if you have to sometimes you have to most okay, let me show. Here if you would do a file, you'd have to do it again. You'd have to write it again and do W or something so that you could finally do. So if you want to read after doing your writing, you have to do the file again, override it, the file variable, write the same thing, file, but instead you'll have to use R. So in that case, we have these further ones which are really simple, which I've already explained, just it's going to be for multiple things. So let's start with our first one, which is R plus. All R plus is doing is this R plus. You can go into Control tab. I meant Shift tab. Huh? Or wait. Okay, never mind. Um, you can just there's many options you can do, and one of them we can say for multiple stuff is R plus. All R plus is doing is it's gonna allow you to read your file as well as write. So you don't need to override your file again and make it super hard. You can make your syntax easier by just adding R plus. So we'll do the same thing, but this is just a much easier, more you're optimizing your code to be simpler. And then we have W plus, which is the same thing as R plus. It's just allowing you, I meant W plus. All W plus is gonna do same thing as R plus. It's gonna allow you to write and read. So R plus and W plus is same. So I'll write it right here. R plus equals to W plus. And then we have as well as A plus, which is gonna do, and then we have A plus, which is basically allowing you to append stuff, not write, append, and just read as well. And so also keep in mind it will
if you have this read equal to, and then we have this, if you have r plus, because it's starting with an r, your file has to exist. And now w plus, if it exists, it will just override the whole file. And if it doesn't exist, it will create it w plus. That's the difference. Otherwise, they're similar. They're doing your same code, but if this doesn't exist, there goes error. And if this exists, w plus exists, then it will override. And if it doesn't exist, it will create one and then write whatever. And a plus, all it's doing is it will append and read. So it will just create a new file if it doesn't exist. Otherwise, it will just append into it, allowing you to append and read. And we also have, like I said, here we have read binary. We have write in binary. We also have append in binary, which is appending, but in just a binary format. But you also have another weird part, but it's gonna do. Then we also have, as well as we also have R plus B, which looks like this, R plus B, which is just um reading and writing, but in binary. Because R plus, like I said earlier, R plus is read and write. B, it's gonna allow you to do instead in binary. But that's not the, but there's also another way to do it. Let me keep tell you this, but R plus B is the same thing as RB plus. They're doing the same thing, so you can use any way you want. There's also W plus B, which is WB plus. And then we also have A plus B, which is equal to AB plus. So what it's allowing you to do is, firstly, keep in mind of what is A plus, W plus, or R plus doing. Think of that first. And then once you're done with thinking of that and you know what it's doing, instead of doing it in text, do it in binary. And you can also do T as well. Like, it's not a big deal. And yeah, that's about it for file handling. It's just a really good thing. Python, because it's just, really useful. It will help you store stuff. You can use it for projects. And yeah, it will save. That's all. Okay, Ashir, that's really great. You actually give us the idea that how actually the files actually read और समथिंग जो कि एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि फाइल को रीड करना क्यों इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आप लोगों से ये चीज तो पहले डिस्कस हो चुकी है कि फाइल को रीड करना क्यों इम्पोर्टेंट है और फाइल का डेटा हम लोगों को क्यों जरूरी है। बट एक चीज जो बाइनरी चीज में मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ, जो बाइनरी के फॉर्मेट में एक चीज डिफाइन करना चाहती हूँ, वो ये है कि आप लोगों के माइंड में सवाल होगा कि व्हाई डू वी एक्चुअली नीड अ बाइनरी। मतलब इसका कोई काम तो नहीं है ना। ठीक है, देखो बाइनरी का रियली हमें कोई काम नहीं है एज अ ह्यूमन। आपको और मुझे काम नहीं है, बिकॉज मुझे समझ में आ रहा है जो फाइल में लिखा हुआ है। बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडल्स, जैसे कि मैं इमेजेस की बात कर लूँ अगर, तो इमेजेस का डेटा अगर हम एक मॉडल को प्रोवाइड करते हैं, इमेजेस क्या होती है, उसके अंदर विजुअल्स होते हैं, विजुअल्स के अंदर पिक्सल्स होते हैं। उन पिक्सल्स को अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं कि ठीक है ये विजुअल्स बना हुआ है, यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक बर्ड है, या कुछ भी है, वो सब हम मैनेज कर सकते हैं। बट मॉडल नहीं कर सकता। उस सिनेरियो में जो हम करते हैं वो बाइनरी कन्वर्ट कर देते हैं। बाइनरी कन्वर्जन क्या करता है, बाइनरी कन्वर्जन उसको ये बताता है कि ठीक है, आपकी जो इमेज है वो रीड करना एक कंप्यूटर के लिए आसान होता है, बिकॉज ऑल यू नो दैट कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज ज्यादा समझ में आती है रादर देन अ ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज हमें समझ में आती है बट कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है। तो इसी वजह से हम बाइनरी को यूज करते हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर को कभी किसी किस्म का मसला हो रहा हो तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सके। अच्छा, एक चीज ये भी बता दूं कि फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स
जो ये बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये ज्यादातर बैकएंड पे यूज होते हैं और इमेजेस के साथ यूज होते हैं। बैकएंड पे क्यों यूज होता है? क्योंकि बैकएंड पे आप हमेशा यूजर से फाइल को गेट करते हो। जब आप फाइल को गेट करते हो तो आप उसको इनकोड करते हो। वाई इनकोड करते हो? ताकि जो आपका कंप्यूटर है या जो आपकी एपीआई है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। सो इसी वजह से हम बाइनरी को यूज कर रहे होते हैं कि ठीक है हमारे पास फाइल आ गई, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, एज अ ह्यूमन मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई उस फाइल की, बट एज अ कंप्यूटर उसको नहीं हुई है, तो वहां पे हम बाइनरी का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइज नाउ दैट व्हाई वी आर यूजिंग बाइनरी। एंड या श्योर, थैंक यू सो मच, यू डिफाइंड इट वेरी वेल और हर चीज को काफी अच्छे से क्लियर किया है आपने। थैंक यू सो मच। There, या no problem. In the chat, I'm going to send all the kinds of modes so that you can see it. हम्म Here's the first part and here's second part. या यू कैन शेयर। Here's the parts if you forgot while I was explaining, don't mind just about looking here. It's explaining everything about it. If it says truncates, that just means override. Yeah, that's all I had to talk. या थैंक यू आशिर। ओके, नाउ आशिर इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव और वी विल Okay. सी। ओके, Yeah, Allah Hafiz. लाफिज। Okay, so now this is all about files. Now the part comes that we need to work on the Streamlit. Anyone have any question? First, I need to ask that. I'm sharing my screen again. Just give me a minute. I need to open that folder. Mm, okay. Can you see my screen? Can you see my screen now? यस मैम। ओके, सो कल हमने क्या कर लिया था? हम लोगों ने अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया था। वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें समझ आ गया था कैसे क्रिएट करते हैं, और वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना सीखा था। सही है। और इसके बाद हमने स्ट्रीमलीट को क्या किया था? इंस्टॉल किया था। अब मुझे कोई कमांड बताएगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कैसे करते हैं? जल्दी से कमांड बताओ। हम्म माई env scripts activate। ठीक है, ये कमांड होती है जिसके थ्रू हम एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, कल किसी ने मुझसे सवाल किया था कि हर बार हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। नो, हर बार आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना होता, आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट हर दफा एक्टिवेट करना होता है। दैट्स द पॉइंट हियर। ओके, आपने एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद हमें पता है हमारा स्ट्रीमलेट ओपन है। अच्छा, स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी को हमेशा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई app.py के नाम की। ठीक है, अब app.py के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है स्क्वायर का। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। या स्क्वायर का छोड़ो, ऐड का फंक्शन कर लेते ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। ऐड का हमने फंक्शन बनाया a, b। मैम ये बहुत छोटा छोटा है, स्क्रीन साइज जूम कर दे इसका। ओके, अब ठीक है, ये एक काम करते हैं। यस। बेसिकली मैं स्क्रीन साइज के बजाय इसका फॉन्ट साइज कर देती हूँ। ओके, या नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, हमने a, b लिया और रिटर्न करवा दिया मैंने a+b। सही है, ये तो मैंने अपना एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब देखो, मैंने ये फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है, बट इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे यूज नहीं करना, मैं मेन पे यूज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं डेटा कहाँ से लेकर आ रही हूँ? फ्रंट एंड से लेकर आ रही हूँ। जब मैं फ्रंट एंड से डेटा लेकर आ रही हूँ तो डेटा तो मेरा यहाँ पर आएगा। सही है, इस वाली फाइल पे आएगा। ठीक है,
तो क्या होगा, अच्छा अब मेरी फाइल डेटा तो यहाँ पर है बट मेरा जो फंक्शन है वो तो दूसरी फाइल में है। तो अब क्या करेंगे, इस सिनेरियो के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमारी इस फाइल में से ये वाला जो एक फंक्शन है इसको हम चाहते हैं कि हम इस फाइल में कॉल करवा दें। ठीक है, फंक्शन को हम कॉल करवाते हैं, तो हम चाहते हैं कि इस फाइल को हम कॉल करवा दें। तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम अपने ही उससे हमें लेना है, तो हम लिखेंगे ऐप। जैसे ही मैंने डॉट लिखा, इसको समझ आ गया कि अच्छा मैं डायरेक्टरी से ही लेने की बात करी, डायरेक्टरी से मैंने ऐप लिया, इम्पोर्ट, ठीक है, ऐड, ठीक है। अब देखो मेरे पास फंक्शन आ गया, सही। और ये देखो इसने बता दिया, इसको मैं हटा देती हूँ। अब मेरे पास जब फंक्शन आ गया, अब मैं इस फंक्शन का क्या कर सकती हूँ, मैं प्रिंट करूंगी, ऐड लिखूंगी और 2,3 पास कर दूंगी, दैट्स इट, मेरा फंक्शन चल गया। सही है। तो इससे क्या हुआ, मैंने ये फंक्शन तो किसी और फाइल के अंदर कॉल करवाया था, लिखा था, ठीक है, बट मैं इसका यूजेज जो है वो किसी और फाइल में कर रही हूँ। ये वाला जो काम मैं कर रही हूँ दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स इनको कहते हैं हम। मॉड्यूल्स का मतलब होता है कि आपने एक चीज बना के रख दी, अब उसको कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, मॉड्यूल्स भी कह सकते हो, लाइब्रेरी भी कह सकते हो, इस तरीके से मल्टीपल हम नाम देते हैं उसको। ठीक है, एक दो तरीके होते हैं, या तो आप पूरी की पूरी फाइल इंपोर्ट करवा दो, जस्ट लाइक दैट, आप ऐसे भी कर सकते हो, इंपोर्ट ऐड पूरी, सॉरी ऐप नॉट ऐड, आप पूरी की पूरी फाइल ऐड कर कॉल करवा दो यहाँ पे। ठीक है, तो वो पूरी की पूरी फाइल को लोड कर देगा। बट आप चाह रहे हो कि नहीं, फाइल को मैं लोड नहीं करवाना चाह रहा, मैं स्पेसिफिक एक फंक्शन को लोड करवाना चाह रहा हूँ, तो आप इस तरीके से करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कि आप वेरिएबल भी कॉल करवा सकते हो, आप इसके अंदर फंक्शंस कॉल करवा सकते हो, आप इसके अंदर लिस्ट कॉल करवा सकते हो, जो भी चीज आपने इस वाली फाइल के अंदर बनाई होगी, यू कैन कॉल दैट इन दस। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको मॉड्यूल, या किसी को समझ नहीं आया? समझ मैम में एक आ बार गया? repeat कीजिए। मॉड्यूल का मतलब होता है कि आपने अपनी किसी और फाइल में से उसको, मतलब एक फाइल आपने ऐप की बनाई है, उसके अंदर आपने, सॉरी, आपने एक फाइल ऐप की बनाई है, आपने इसके अंदर अपना काम परफॉर्म कर दिया। आपने बोला मुझे फंक्शन बनाना है ऐड का, आपने बोला मुझे फंक्शन बनाना है सबट्रैक्ट का, तो आपने वो भी बना लिया। ठीक है, सबट्रैक्ट का फंक्शन भी बना लिया। अब आप कहते हो ठीक है, मेरा तो ये दोनों चीजें बन गई, बट मेरे पास डेटा कहीं और से आ रहा है। डेटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ num1 इक्वल्स टू, अभी स्ट्रीमलेट को हटा देता है ताकि फिर इसको भी बाद में समझाऊंगी तो समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ num1 इनपुट, पहले इंट लिखूंगी, फिर लिखूंगी इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, एंड देन num2 लिख के एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिया ऐड को। ठीक है, सॉरी, सही है। अब क्या हो रहा है, मैंने यूजर से इनपुट किस फाइल में लिया है, मेन की फाइल में लिया, बट मेरे पास फंक्शन किस फाइल में है, ऐप की फाइल में। ठीक है, दो डिफरेंट फाइल्स में दो डिफरेंट काम हो रहे हैं। सही है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि मुझे मेरे यूजर से दो इनपुट लेने हैं और उन इनपुट को ऐड करवाना है। ठीक है, एडिशन के लिए मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन बना के रख दिया है, जो कि मैंने यहाँ पे बना के रख दिया है। अब मैं एक फाइल बना रही हूँ जिस फाइल के अंदर मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ, और उस इनपुट को मैं पास कर दूंगी दूसरी वाली फाइल के फंक्शन के अंदर। बट द प्रॉब्लम इज कि फंक्शन तो दूसरी फाइल में है, उसको मैं उस फाइल में कैसे लेकर आऊँ जहां पे मेरा डेटा है, जहां से मैं यूजर से डेटा ले रही हूँ। ऐसे सिनेरियो में जहां हमें पता होता है कि हमें कोई चीज दूसरी फाइल से लेने की नीड है, हम इस टाइप के चीज को कहते हैं मॉड्यूल्स, या इंपोर्टिंग ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, क्या होता है, ये जो फाइल है अब आपकी एक मॉड्यूल बन गई है। मॉड्यूल का मतलब है कि आपने अपना काम करके कहीं पे रख दिया है, और अब आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, किसी भी फाइल में किसी भी वक्त यूज कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने मेन की फाइल पे मैं गई, और मैंने यहाँ पे बोला कि भाई फ्रॉम डॉट ऐप, डॉट में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि डॉट का मतलब होता है कि करंट डायरेक्टरी आपकी। ठीक है, मेरी करंट डायरेक्टरी में से ऐप की फाइल है, उस फाइल में से इंपोर्ट कर दो कौन सा फंक्शन, ऐड का फंक्शन। अभी मैंने सबट्रैक्ट का फंक्शन इंपोर्ट नहीं करवाया, तो देखो अगर मैंने सबट्रैक्ट का फंक्शन इंपोर्ट नहीं करवाया और मैं यहाँ पे सब लिखूंगी ना, तो ये मुझे एरर दे देगा। ये कहेगा भाई सब इज नॉट डिफाइंड। देखो इसने लिख दिया सब इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवाया, भले मैंने डिफाइन जरूर कर दिया है, ठीक है,
बट मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवाया। अगर मुझे इंपोर्ट करवाना है मैं कॉमा डाल के सब लिख दूंगी। तो इसने इंपोर्ट कर दिया और देखो यहाँ से एरर चला गया। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज अ मॉड्यूल और इंपोर्टिंग वी कैन से। ठीक है, और इसको भी आप प्रिंट करवा दो, प्रिंट। ठीक है, अब मैं इस फाइल को रन करूंगी। फाइल को रन करने का मतलब वे होता है जुपिटर नोटबुक में, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। हाँ, फाइल को जुपिटर नोटबुक में रन करने का वे होता है पाइथन लिखना होता है और उसके बाद जो भी फाइल है उसका नाम लिखना होता है विद एक्सटेंशन। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब आप इसको रन कर दो। इम्पोर्ट, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको डॉट हटा देते हैं, वैसे ही डॉट लगाना पड़ता है। एंटर फर्स्ट नंबर 1 आ गया, चलो मैं 3 लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो सके। और एंटर 7 नंबर 6। अगर 3 + 6 करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? 3 + 6 करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? 9 9। और 3 - 6 करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? -3। एंटर, देखो आ गया। ठीक है, फंक्शंस मेरे चल गए। बट फंक्शंस क्या इसी वाली फाइल के अंदर डिफाइन थे? नहीं, फंक्शन किसी और फाइल में डिफाइन थे। ठीक है, सो दैट्स द वे दैट यू कैन इंपोर्ट द फाइल। ओके, सेकेंड वे इज, मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो पूरी पूरी फाइल को, लाइक ऐप। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब देखो ऐप लिख दिया। अब मैं इसको ना कमेंट कर देती हूँ 1 मिनट के लिए, तो आप लोगों को एरर समझ में आएगा। मैंने सिर्फ पूरी फाइल को इंपोर्ट किया, ऊपर वाली फाइल को मैंने कमेंट कर दिया। देखो आ गया एरर, एड इज नॉट डिफाइंड, सिमिलरली सब इज नॉट डिफाइंड। सही है, अब इस सिनेरियो में जब पूरी की पूरी आप फाइल को इंपोर्ट करते हो तो आप क्या लिखते हो? ऐप डॉट। ठीक है, इससे इसको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐप की एक फाइल है जिसके अंदर एक फंक्शन है। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे भी क्या लिखोगे? ऐप डॉट। तो उसको पता चल जाएगा ऐप की एक फाइल है जो कि इंपोर्ट हुई हुई ऑलरेडी, उसके अंदर एक फंक्शन है। ये सेकंड वे है अगर आप कभी भी किसी फाइल को इंपोर्ट करते हो अपने पास। ठीक है, फर्स्ट वे है कि आप डायरेक्ट फंक्शन को इंपोर्ट करवा लो। सेकंड वे है कि आप डायरेक्ट सिर्फ फाइल को इंपोर्ट करवा लो। ठीक है, अच्छा थर्ड वे देखते हैं। सेम थर्ड वे क्या है, आपने फाइल को इंपोर्ट करवाया, बट अब आप इस फाइल को एक नाम देना चाह रहे हो एज ए। सही है, आपने इसको बोल दिया ए। अब देखो मैं क्या करूंगी, मैं ऐप की जगह पे इसको ए कर दूंगी। देखो चल गया, स्टिल चल गया। तो ये 3 तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप इंपोर्ट करवा सकते हो किसी भी लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी जो आप इंस्टॉल करते हो, जैसे हमने कल पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट किया था, किसी भी लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट करवा सकते हो, किसी भी फाइल को आप इंपोर्ट करवा सकते हो आराम से, ये 3 तरीकों से। और मेनली जो तरीका होता है वो ये वाला तरीका होता है। जब हम किसी फाइल से इंपोर्ट करवाते हैं अपनी डायरेक्टरी की तो ये वाला तरीका होता है। जब हम किसी लाइब्रेरी से इंस्टॉल करवाते हैं तो ये वाला तरीका होता है। ठीक है, तभी आप देखो जब मैंने ऊपर स्ट्रीमलिट लिखा था तो मैंने इंपोर्ट स्ट्रीमलिट एज एसटी कर दिया था, ताकि मैं पूरा पूरा स्ट्रीमलिट ना लिखूं बल्कि उसका शॉर्ट फॉर्म लिखूं। सही है, क्लियर हो गया ये किस सबको? जी ये मैम। किसी को इशू तो नहीं है इस पे? नहीं। सब मुझे कमेंट पे बता दें, यस और नो। नो इशू। कोई और? उस्मान, आयशा, समीना? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। मैम एक चीज बता दें, अगर हमने जी एक जी जी। वेरिएबल इंपोर्ट करवाना हो हम्म, तो वो कैसे होगा? सेम है। सिंपल एक वेरिएबल हमने यहाँ पे फंक्शन आपने किया है। हाँ, मैं फंक्शन की जगह पे यहाँ पे लिख देती हूँ नेम का वेरिएबल। ठीक है, नेम पे मैं वैल्यू सेव करवाती हूँ, कोई वो नहीं लिखती। सही है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ जाऊंगी, इसको जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल करवाए थे सेम मैं यहाँ पे नेम कॉल करवा दूंगी। ठीक है, नेम कॉल करवा दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ, इसको मैं जरा वो कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और मैं यहाँ लिख दूंगी प्रिंट नेम। सही है, और मैं इसको रन कर देती हूँ। आ गया? ठीक है, क्लियर? क्लियर ना? ओके, तो वेरिएबल भी आप इस तरीके से, अच्छा वेरिएबल और फंक्शन अगर आप कॉल करवाओगे ना तो इसका देखना ये कलर चेंज कर देगा अपना। ठीक है,
येलो का मतलब होता है एक फंक्शन कॉल करवा रहे हो आप, और ब्लू का मतलब होता है कि एक वेरिएबल कॉल करवा रहे हो। सही। अच्छा, इसको अब मैं कमेंट कर देती हूँ। अच्छा, ये सबको समझ आ गया कि इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एसटी हमने क्यों किया है? ठीक है। जी मैम। अच्छा, अब एस टी इट सेल्फ अ लाइब्रेरी। ठीक है, अब मैं एस टी डॉट लिखूंगी ना, तो देखो ये मुझे इतने सारे फंक्शंस दे रहा है। ये जितनी भी चीजें ना, ये सब मैं अपने एस टी वाली लाइब्रेरी के अंदर इस्तेमाल कर सकती है, देखो। ठीक है, मतलब अगर मुझे इस्तेमाल करने की बात करी, मैं राइट करवा सकती हूँ, मैं चार्ट बना सकती हूँ, मैं ऑडियो ले सकती हूँ, ऑडियो का इनपुट ले सकती हूँ, मैं बार चार्ट बना सकती हूँ, सिमिलरली चैट इनपुट ले सकती हूँ, चैट मैसेज कर सकती हूँ। सिमिलरली देखो, डेटा फ्रेम को मैं यूज कर सकती हूँ, डेटा फ्रेम में डाउनलोड डाउनलोड बटन में बना सकती हूँ। ये सारी चीजें देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये वही चीजें जो हम यूज एक है ना, फ्रंट एंड पे एज अ यूजर कर रहे होते हैं, हम डाउनलोड कर रहे होते हैं, हम चार्ट देख रहे होते हैं, हम फाइल को अपलोड कर रहे होते हैं, हम फॉर्म को अपलोड सबमिट कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिफाइन होगी। एक लोगो हम देख रहे होते हैं, या वी नीड टू इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट। यस, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। इवन आप मैप भी बना सकते हो, अगर आपको कभी मैप का बनाने का आ जाए तो आप मैप बना सकते हो। सही है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें ले सकते हो। अब हमारे पास अभी हमने जो सिचुएशन देखी थी, सबसे पहले हम टाइटल चला देते हैं। टाइटल का मतलब ये होता है कि भाई आप अपने कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, आप उसका नाम दे रहे हो, तो हम अपनी एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं कैलकुलेटर। बिकॉज हम क्या करेंगे, हम यूजर से अगेन यही चीज इंप्लीमेंट करेंगे, इंटीजर लेंगे और उसको पास कर देंगे इस फंक्शन के अंदर, ताकि हम हमें समझ आ सके कि हम दो चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं, एक लाइब्रेरी को और दूसरा अपने मॉड्यूल्स को। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको क्लियर है? किसी को कोई इशू तो नहीं? नहीं मैम। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एस टी डॉट टाइटल लिखा। अब मेन पार्ट आता है। देखो, भले ये पाइथन की फाइल है, सही है, बट मेरे को क्या चलाना है, मेरे को स्ट्रीमलेट चलाना है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कभी आपको फ्रंट एंड चलाना होता है या आप स्ट्रीमलेट अपने पास चलाते हो, तो पाइथन की तरह आप उसको रन नहीं करते। ठीक है, स्ट्रीमलेट का अपना वे डिफाइन है जिसके थ्रू आपको रन करना होता है। उसके लिए आप क्या लिखोगे, स्ट्रीमलेट रन, आपकी फाइल का सिर्फ नाम, नॉट एक्सटेंशन, सिर्फ नाम, या एक्सटेंशन भी देख लेता है। ठीक है, सही है। मतलब अगर आपको सिर्फ पाइथन की फाइल चलानी है तो आप पाइथन मेन डॉट पी वाई करोगे, बट अगर आपको यूआई की फाइल चलानी है, आपको स्ट्रीमलेट की फाइल। ओके, सो ये देखिए, इससे मुझे एक एरर डिफाइन कर दिया कि नेम एरर आपके पास आ रहा है नेम का। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एरर क्यों आ रहा है। डू यू रिमेम्बर कि हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल कॉल करवाया था, बट उस वेरिएबल को मैंने प्रिंट भी करवाया था। अब उस वेरिएबल को प्रिंट करवाने के बाद मैंने उसको कमेंट नहीं किया, इस वजह से उसने मुझे एरर थ्रो कर दिया कि भाई मैं इसको रन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास नेम डिफाइन नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप कंट्रोल सी करोगे। कंट्रोल सी करने से आपका जो सर्वर है वो बेसिकली डाउन हो जाएगा। सर्वर कौन सा सर्वर, फ्रंट एंड का सर्वर। ये बेसिकली एक सर्वर क्रिएट करता है जिसके थ्रू आप जाके उसको कनेक्ट कर सकते हो। स्ट्रीमलिट रन मेन डॉट पी वाई आपने लिखा, अगेन सेम कमांड आप रन करोगे, और सेम कमांड रन करने के बाद आप यहाँ पे आओगे और ये दोबारा से आपके साथ रन हो जाएगा। जैसे ही वो आपकी कमांड रन हो जाएगी, यहाँ पर देखो ये कमांड रन हो गई। अब मैं यहाँ देखूंगी क्या हो गया, सी, ये मेरे पास रन हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, दोबारा से रन होगा। और हम लोग ने क्या लिखा था, एस टी डॉट टाइटल लिखा था, देखो टाइटल आ गया हमारे पास कैलकुलेटर का। सही है, तो ये काम वो था कि ठीक है, हमारे पास स्ट्रीमलेट हमने इंस्टॉल कर ली, स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट करवा लिया, और इंपोर्ट करवाने के बाद उसका टाइटल हमने यहाँ पे देख लिया। अब जल्दी से हम हमारा टास्क कंप्लीट करते हैं। टास्क इज दैट हमारे पास ये दो इनपुट्स हैं। ठीक है, जस्ट यू नो दैट हम इनपुट अब डायरेक्टली टर्मिनल पे नहीं लेंगे। हम इनपुट कहाँ पे लेंगे, जो कि हमारे पास स्ट्रीमलेट की ऐप है, हम यहाँ पे इनपुट लेंगे, राइट। तो उसके इनपुट के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा। हम क्या लिखेंगे, num1, अगेन वही चीज के आप लिखोगे एस टी डॉट। ठीक है, अच्छा एस टी डॉट देखो देखो खुद बता रहा है मुझे। एस टी डॉट करने के बाद आप लिखोगे, जैसे हम इनपुट लेते थे पाइथन के अंदर, सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे नम इनपुट, नंबर इनपुट। ठीक है, नंबर इनपुट का मतलब है कि हमारे पास कोई नंबर एज ए इनपुट आएगा। अगर मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए होगा, जैसे नेम है, मैं नेम अगर लिखती हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखूंगी एस टी डॉट टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट आएगा, एंटर योर नेम, राइट।
तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होते हैं। ये इनपुट्स बेसिकली हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू टेक द डेटा फ्रॉम द यूजर। सही है। अब क्या करूंगी, अच्छा ये देखो, ये मुझे बार बार बंद करना पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक कमांड होती है माइनस माइनस रीड डॉट लिख दो आप। सही है? तो ये क्या करेगा, बार बार आपकी फाइल को देखेगा। और ये वैसे मुझे ये नहीं पता स्ट्रीमलेट पे चलता है नहीं चलता, अदरवाइज जो हम काम करते हैं तो उसके अंदर तो ये चल जाता है। देखा, ये नहीं चला। इससे क्या होता है, माइनस माइनस रीलोड लिखने से ये होता है कि आपकी जो फाइल है वो उसको बार बार रीड करता रहता है और अपडेट करता रहता है। ठीक है। अगेन स्ट्रीमलेट डॉट रन करेंगे हम, वही चीज। ठीक है। और ये सर्वर हमारा ऑन हो गया। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये बार बार आपकी न्यू फाइल एक न्यू टाइप पे आपको जनरेट करके देता है। ठीक? तो पहले हमारी फाइल कुछ इस तरीके की थी, अब हमारी फाइल कुछ इस तरीके की हो गई है। ठीक है। इस तरीके से क्या हमें समझ आ रही है कि ठीक है, एंटर योर नेम, आप नेम लिख दो अपना, अक्सा। फिर आप अपना नंबर लिख दो, जो भी आपका नंबर है, लाइक 12 लिख दो आप। फिर इसके बाद सेकंड नंबर आप अपना 13 लिख दो। अच्छा ये ऐड और सब क्यों आ रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसने यहाँ पे ये काम कर दिया है। सही है, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ ताकि ये चीज आपको समझ आ सके। सही। अच्छा इतना क्लियर है, ये वाला आउटपुट क्लियर है आप सबको, ये तीन जी चीजें। मैम। ठीक है, अब काम करते हैं हम हमारी वो वाली फाइल से जो हमने यहाँ पे फाइल बनाई थी। सही। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉल करवाएंगे। क्या कॉल करवाएंगे, ऐड और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमने इसको कॉल करवा दिया। अब हमारे पास नंबर 1 भी है, अब हमारे पास नंबर 2 भी है। सही है। बट अब मुझे ये बताओ, जब मैं ये कर लूंगी तो मुझे यहाँ पे एक बटन चाहिए ना, जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो ही मेरे पास कोई काम होना चाहिए, ऐसा ही है। जी। ठीक है। अच्छा सिमिलरली इफ की कंडीशन क्यों लगाएंगे हम यहाँ पे, इसने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाएंगे। सही, मैं आपको बताती हूँ हम क्यों लगाएंगे। st डॉट बटन लिखूंगी मैं यहाँ पे, और बटन पे मैं वही चीज लिख दूंगी जो मुझे काम करवाना है। ठीक है, क्लिक। ठीक है। अच्छा ऑन क्लिक पे आप ये भी करवा सकते हो कि डायरेक्ट ऐड करवा दो। सही, ये भी काम आप कर सकते हो, बट हम इस तरीके से नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ये करके दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। हाँ कहीं पे वो तो नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बटन लिखा, बटन के बाद उस बटन का नेम डिफाइन किया। जैसे हमने यहाँ पे एंटर ये सेकंड नंबर लिखा था, सिमिलरली इसका नेम डिफाइन कर दिया। और फिर हमने बोला कि जैसे ही उस बटन पे क्लिक हो, ऑन क्लिक हो, तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए, जो ऐड वाला फंक्शन है वो कॉल हो जाए। सही है। तो ये काम हमने यहाँ पे कर दिया है। क्लियर है इतना सबको। जी मैम। ठीक है, चलो इसको अब करके देख लेते हैं दोबारा से। कंट्रोल सी, इसको रन करेंगे। वैसे मैं इसका वे देखूंगी कि किस तरीके से हम फाइल को बार बार रीलोड करवा सकते हैं, सर्वर को मतलब। मैम बस पेज को रीलोड करने से हो रहा है वो। वो तो हो रहा होगा मुझे पता है, लेकिन ऑब्वियसली क्या होगा कि आपकी वो फाइल बार बार यहाँ पे कॉल हो जाती है। तो मुझे ये चेक करना, बेसिकली पेज पे रीलोड करने पे तो होगा वो। मैं चाह रही हूँ कि वो यहीं पे डायरेक्ट रीलोड हो जाए जैसे ही मैं इसको सेव करूँ, वो वाली बात मैं कर रही हूँ। ठीक है। ओ देखो ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अक्सा लिखा। मैंने अपनी वैल्यू दी यहाँ पे 12, यहाँ पे मैंने सेकंड वैल्यू दी 14। अब मैं ऐड करवा रही हूँ। सही। अच्छा देखो उसने मुझे बता दिया। ठीक है। ठीक है, नॉट कॉलेबल। उसका रीजन क्या है, देखो मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक पे फंक्शन तो कॉल करवा दिया, बट इस फंक्शन का एक रिटर्न है। सही है, इस फंक्शन का क्या है, एक रिटर्न है, मतलब ये वैल्यू कोई ना कोई रिटर्न करेगा। और उस वैल्यू को सेव करवाने का कोई वे नहीं है यहाँ पे, इस वजह से मैं मना करी कि इस तरीके को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड तरीका देख लेते हैं जो जिसकी बात हम पहले कर रहे थे। st डॉट बटन लिखा हमने, और सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया ऐड का। ठीक है। अब अब इस चीज को समझो, स्टेटमेंट समझना मेरी, ताकि आपको कोड समझ में आए। मैंने ये बोला कि ठीक है मेरे पास ये नंबर आ गया, ये भी नंबर आ गया, जैसे ही मेरे बटन पे क्लिक हो मैं ऐड का फंक्शन कॉल करवाऊं। सही है, मतलब यहाँ पे मेरे पास अब क्या हो गई, कंडीशन आ गई कि जैसे ही मेरे बटन पे क्लिक हो, कंडीशन आ गई एक। ठीक है, ये कंडीशन समझ आ रही है सबको, जी मैम। किसी और को समझ आ रही है, आफाक, उस्मान, नहीं आए तो मुझसे पूछ लें।
जी मैम। ठीक है, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि अच्छा कंडीशन है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, इफ st.button। ठीक है, और उसके बाद मुझे ये पता चल गया कि ठीक है मुझे ये बटन लिखना है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अपने फंक्शन को कॉल करवा सकती हूँ यहाँ पे। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, वो एक फंक्शन मतलब एक फंक्शनैलिटी जो मेरी कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। उस फंक्शनैलिटी को फुलफिल करने के बाद मुझे एक और काम करना है, क्या करना है, अपने फंक्शन को कॉल करवाना है। ठीक है, अब उस फंक्शन का आपको मैंने जैसे कहा कि मेरे पास क्या है, एक रिटर्न है। रिटर्न हमेशा क्या करता है, एक वेरिएबल में सेव करता है वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वैल्यू इक्वल्स टू एड। ठीक है, क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना? जी मैम। सबको इतना क्लियर है? बाकी सब? तो मैम आपने इफ स्टेटमेंट के बाद जो बटन ऐड किया है क्या उसमें यूआरएल में? बटन सॉरी। ऐड नहीं किया। देखो फ्रंट एंड पे अगर आप देखो, तो हाँ मैं जी। अगर आपको दिखाऊं दोबारा चला के, इसको हम दोबारा चलाते हैं। ये देखो यहाँ पे एक बटन आ रहा है। ठीक है, अब उस बटन के अंदर देखो कुछ लिखा हुआ है। सही है, तो इसके जो अंदर लिखा हुआ है ना, वो मैंने यहाँ पे ऐड लिखा है बस। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सबमिट, ठीक है, कंट्रोल सी करती हूँ मैं, इसको दोबारा रन करते हैं और इसको रीलोड करते हैं। अगर सर्वर आपका बंद होगा तो इस तरीके से आपको एरर दे देगा। ठीक है, इसको रीलोड करते हैं। देखो आ गया सबमिट। ठीक है, तो हम एक बटन बना रहे हैं और उस बटन के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। अब बात ये है कि जैसे ये ऑन क्लिक पे मैं फंक्शन कॉल करवा रही थी, इस फंक्शन का कुछ रिटर्न था, इस वजह से वो मुझे एरर दे रहा था। तो मैंने उसको क्या बोला कि इफ लिख दो, कंडीशन बता दो कि ठीक है ये बटन है, अगर इस बटन पे क्लिक हो जाए, अगर ये बटन क्लिक हो जाए तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाए, कॉल हो जाए। ठीक है, इतना क्लियर है? जी जी मैम। क्लियर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये फंक्शन का कुछ रिटर्न आ रहा था, उस रिटर्न को मैंने एक वेरिएबल में सेव करवा दिया। ये भी क्लियर होगा क्योंकि ये बेसिक है बहुत। ठीक है, ये भी क्लियर है सबको? जी। बाकी सब? यस मैम। जी जी क्लियर ठीक है। है, ठीक है। अब देखो, मैं एक काम करती हूँ, मैं प्रिंट करवा देती हूँ इस वेरिएबल को। ठीक है, मैंने प्रिंट करवा दिया इस वेरिएबल को। अब मैं क्या करती हूँ, मैं दोबारा से अपना मुझे सर्वर ऑन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसके अंदर कुछ चेंज किया। मैं इसको रीरन करती हूँ। रीरन करा, मैंने यहाँ पे अपना नेम लिखा, यहाँ पे मैं 12 लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं 40 लिख देती हूँ, सबमिट। कुछ भी नहीं हुआ, सबमिट हो गया। बट देखो यहाँ पे एक प्रिंट आ गया है, जो दो वैल्यूज मैंने दी थी उसका प्रिंट आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा था। सही, बट द प्रॉब्लम इज मुझे यहाँ पे तो प्रिंट नहीं चाहिए, मुझे तो यहीं पे ही यूजर को दिखाना होगा अपना आंसर, जो भी होगा आंसर। ऐसा ही है? ठीक है, जी। प्रॉब्लम क्लियर हुई कि भाई यहाँ पे तो मेरा वैल्यू जो मैंने मैंने अपना फंक्शन कॉल किया था, उस फंक्शन से रिजल्ट मुझे आ रहा है, बट ये रिजल्ट मैं यूजर को नहीं दिखा रही, इस रिजल्ट को मुझे यूजर को भी दिखाना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, अगेन स्ट्रीमलेट का यूज करेंगे, st.write। राइट का जो फंक्शन होता है वो जो वैल्यू आप यूजर को शो करवाना चाहते हो वो वैल्यू शो करवा देता है। ठीक है, मैं दोबारा से अपना सर्वर रीरन करूंगी। देखो, मैंने दोबारा से अपना सर्वर रीरन किया। सही है, अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं 34, यहाँ पे मैं 50 लिख देती हूँ। अब जैसे ही मैं सबमिट करूंगी, देखो आ गया 84। रिजल्ट आ गया यूजर के सामने। सही है, जी मैम। तो जो काम हम टर्मिनल पे कर रहे थे, अब वही सेम काम हम कहाँ कर रहे हैं, यूजर इंटरफेस पे कर रहे हैं।
एंड दैट इज एक्चुअली यूआई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? Yes. यस। यस मैम। ठीक है, तो एक काम हम ये कर लेते हैं, मैं ये कोड आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, आप सब ने क्या करना है, आप सब ने इस कोड को अपने पास रन करना है। सही है, और अपने पास रन करने के बाद जो एरर आए इसको समझना भी है, जो एरर आए मुझसे पूछ सकते हो। सही है। अच्छा, अब एक और चीज मैं करती हूँ, एक और काम हम करेंगे। आप लोगों के लिए टास्क ये है, इस असाइनमेंट में तो अभी वीकली असाइनमेंट तो आप लोगों के पास आएगा, अभी जल्दी से एक टास्क करते हैं हम लोग। ठीक है, हम जल्दी से टास्क क्या करते हैं, हम यूजर से स्ट्रिंग लेते हैं, मतलब उसका नेम लेते हैं और उस नेम को अपर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब एक कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यूजर का इनपुट लो जल्दी से आप लोग स्ट्रीमलिट पे, और नेम लेना, जो मैंने नेम लिया हुआ है उसी को ही लो और उसको कन्वर्ट कर दो अपर में, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। जल्दी से करो सब, अगर किसी के पास कोई एरर है तो मुझे बताना।